ऑक्यूपेशनल स्किल्स। तो उसके अलॉन्ग विथ द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशनल स्किल्स हम लेटेस्ट मॉडर्न स्किल्स आल्सो वी आर टीचिंग। तो प्राचीन विद्याएं ही नहीं मगर मॉडर्न विद्याएं, यानी फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे चीजें बच्चों को सिखाते हैं, रोबोटिक्स, ये सारे चीजें। तो वाल्मीकि आश्रम वेबसाइट valmiki.ashram.org और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9611522541। आपको अगर वेबसाइट में जाना है तो www.valmikiashram.org। हमारा विजन एंड मिशन यहाँ पे दिया हुआ है, टू cultivate future thought leaders and entrepreneurs who are intellectually adept, well-rounded and deeply rooted in principles of dharma। यानी बच्चे अपना अतीत के साथ जुड़ के आगे की रणनीतिकार, अपना देश के लिए एम्बेसडर्स, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, अपना रूट्स, अपना मूल से जुड़े हुए लोग पैदा करना हमारा लक्ष्य है। तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, पूरा गुरुकुल स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाते हुए हम इंग्लिश में, इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहती है और इंग्लिश में गणित और विज्ञान दोनों इंग्लिश में भी रिपीट करते हैं, बाकी के सारे संस्कृत में होते हैं। इतिहास, भूगोल, संस्कृतम, गणितम, विज्ञानम, शास्त्र, नाट्यशास्त्र, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, वृक्षशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये सब पढ़ाते हैं बच्चों को। इसके अलावा इंग्लिश एक सब्जेक्ट रहती है, एक मातृभाषा रहती है, और गणितम और विज्ञानम इंग्लिश में भी रिपीट होती है। ठीक है। बच्चों को हर तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रहते हैं, मल्लखंबा, धनुर्विद्या, गटका, तलवार से शूटिंग, रोप मल्लखंबा एक्सेट्रा। मैं नूने रमेश और मेरा धर्मपत्नी स्वप्ना माकम दोनों मिलके ये आश्रम को लगाए हैं। ये हमारा पूरा 9 दिन का नवरात्रि का दिनचर्या है, 9 दिन का। ये फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्टर करके शाम को 7:30 बजे से 9 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये मीटिंग होती है। तो आप हर दिन 9 दिन में ये टॉपिक्स, हिंदू सिंबॉलिज्म, फर्स्ट डे इंडियन नॉलेज सिस्टम इंट्रोडक्शन दिया है हमने, आज दूसरे दिन है इंडियन हिंदू सिंबॉलिज्म, ब्रेकिंग मिथ्स, इंडियन सोसाइटी, कंट्रीब्यूशंस ऑफ भारत, डिस्टॉर्शन इन इंडियन हिस्ट्री, जियोपॉलिटिक्स एंड हिंदूफोबिया, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज इंडियन सिटीजन्स। और ये इस ट्रेनिंग का मुख्य मूल उद्देश्य जो है, आचार्यों को ट्रेन करने के लिए। जो भी आचार्य अपना अपने सब्जेक्ट्स में निष्णात होते हैं, मगर यानी इतिहास हो या अपना मातृभाषाएं हो, संस्कृत हो, व्याकरण, सारे आयुर्वेद हो, पंचांग हो, जो भी सब्जेक्ट्स में, मगर उनके लिए थोड़ा एडिशनल नॉलेज भारत का, क्योंकि ये चीज़ें एकेडमिक्स में नहीं है, हमने इसलिए हमने चूज किया है कि जो आइटम्स एकेडमिक्स में नहीं है वो चीज़ें हम बच्चों को लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसके बाद में, पढ़ाने के बाद इंटरव्यू लेंगे, हम डेमो क्लासेस लेंगे और उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद में हम उनको अपॉइंटमेंट एज IKS ट्रेनर ऑनलाइन या फिर ऑन कैंपस, आपका अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम एंड ऑफ अक्टूबर तक हम
रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एज इंडिया हिस्ट्री इज कनेक्टेड थ्रू द एजेस, पूरा दुनिया का हिस्ट्री अपना देश से जो भी कनेक्टेड है वो पूरा एक बार देखने का, अवेयरनेस देने का हमारा लक्ष्य है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस, फिलोसफी एंड टेक्नोलॉजी, अपना देश से जो भी ज्ञान उत्पत्ति हुआ है अपने ऋषियों के द्वारा, तो वो सारे चीज़ें हम बताएंगे। और ब्रेकिंग मिथ्स, यानी जो बाहर के लोग हमें गलत दिखाने के लिए, हमें हमारे ऊपर राज करने के लिए जो गलत दिखाए हैं और गलत चीज़ें अवधारणाएं क्रिएट किया है, सो दोस रॉन्ग connotations about our Indian society and Indian country and Indian civilization, those things we want to break the myths. Or we have to also do Swapaksha and Purvapaksha. Yani we have to understand who we are and then what is the point of view from where the other side is coming and pointing fingers at us. ये दोनों भी सीखना है। जियो पॉलिटिक्स अफेक्टिंग इंडियन सोसाइटी, यानी अपने देश के लिए क्या क्या चीज़ें आजकल पुराने जमाने से और अभी क्यों टारगेट किया जा रहा है देश को, वो समझने के लिए हमने एक क्लास लगाए हैं। और स्टडी ऑफ इंडियन लिटरेचर, उसके लिए अवेयरनेस देंगे। एंड फाइनली वी नीड टू नो द ट्रूथ। सो आज का मेन टॉपिक जो है हिंदू सिंबॉलिज्म। सो हिंदू सिंबॉलिज्म में हमारा जो पूजा पद्धतियां हैं या फिर टेम्पल्स में या हिंदू सिविलाइजेशन में जो भी इम्पोर्टेंट सिंबल्स जो यूज इस्तेमाल करते हैं, व्हाट आर द सिंबल्स वी यूज, we'll just slide through some of those symbols and explain those symbols importance. सबसे पहले दो जो जो भी कार्य हम करते हैं, पहले या फिर afterwards, in the beginning or afterwards, we utter the word Om, right? The sound and the similar popularity associated with India and Hindus of India for millennia has been Om. Every sloka verse in the divine to the divine in India starts with and ends with Om. Right? India regards Om as the sound of the divine voice of the God. यानी जब इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ है हिरण्यगर्भ के अंदर से, जब वो समय इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में ओम का शब्द का सुनाई दिया, इसलिए ये यूनिवर्सल साउंड है। सो ओम इज called pranava, the primordial sound. Pra means prakriti, nature, nava means new. प्राचीन से है मगर at the same time prakriti, natural sound, is new sound also. So and this sound is not only associated with India, it is associated with every civilization in this world. आप देखिए तो क्रिश्चियंस ओम को एमन बोलते हैं और मुस्लिम्स आमीन बोलते हैं, जो जस्ट दे हैव जस्ट ट्विस्टेड द नेम। सो व्हाट मैंने अभी हिरण्यगर्भा बोला, सो विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस हिरण्यगर्भा। सो हिरण्यगर्भा जो है, इट इज ए गोल्डन एग इन द वूम्ब, द गोल्डन वूम्ब। सो एक इस सृष्टि जो है, सब कुछ एक पॉइंट से शुरू हुआ है, ऐसा हमारा ऋषियों ने बताया हमें ना, दिव्य दृष्टि से ना मेडिटेशन में उन्होंने जाके कैसा इस सृष्टि ने क्रिएट किया है, यही थियरी को, और उसके अंदर हिरण्यगर्भ से
जब वो पूरा मैटर क्रिएट हो जाता है पूरा, उसके बाद में एक एक समय में वो ब्रह्मांड विस्फोटक हो जाता है। उसी को बिग बैंग थ्योरी करके डार्विन ने प्रपोज किया है। उन्होंने अपने ही ग्रंथों में ब्रह्मांड पुराण में से लेकर लोगों को बताया कि ये ब्रह्मांड विस्फोटक से ये ब्रह्म क्रिएट किया गया है अपना यूनिवर्स। सो ईच ब्रह्मांड विस्फोटक से एक मिल्की वे आकाश गंगा तैयार हो जाता है। उसके अंदर जो स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, सब एस्ट्रॉइड्स, सब कुछ क्रिएट हो जाता है। उसका ये ब्रह्मांड विस्फोटक हिरण्यगर्भ में कॉस्मिक एग बोलते हैं क्रिश्चियंस में, that इस यूनिवर्स गॉट क्रिएटेड बाय द गॉड दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए कॉस्मिक एग। मगर और हम करते हैं हमारा हिरण्यगर्भ बोलते हैं, वो लोग कॉस्मिक एग बोल रहे हैं। कॉस्मिक एग यानी गर्भ के अंदर एग होता है ना, तो गर्भ के अंदर यज्ञ होने वाला जो है वही शिवलिंग है। वो गर्भ है, योनि दिखाते हैं, योनि नहीं है, वो गर्भ है, हिरण्य गर्भ है। योनि हिरण्य गर्भ के अंदर जो मटेरियल यज्ञ होता है वही शिवलिंग है। और उसी के अंदर से एक ब्रह्मांड विस्फोटक होता है, बिग विस्फोटक, उसके पर्याप्त ये ब्रह्मा यूनिवर्स ब्रह्मांड ये यूनिवर्स क्रिएट होता है। एक स्फोटक से एक मिल्की वे आकाश गंगा क्रिएट होती है। और इसके बाद में कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स होने के बाद, राइट, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स जीने के बाद ये प्रलय हो जाए, डिसोल्यूशन। ये पहले फिर रिजोल्यूशन होने के बाद ये फिर से गर्भ में, ब्लैक होल बोलते हैं इसको। हिरण्य गर्भ जो है पीछे से जब आती है तो वो ब्लैक होल में जाती है, फिर बाद में वहां पे फिर से निकल होता है। ऐसा हमें हमारे लोग, ऐसा ब्रह्मांड विस्फोटक जो है 84 लाख ब्रह्मांड विस्फोटक हुए हैं ये। और ये ब्रह्मांड जो है कुछ सालों तक जी के अपना विलय हो जाता है अपना हिरण्यगर्भ में। तो ये हिरण्यगर्भ ही ये शिवलिंग के रूप में और एक सिंबॉलिज्म है। तो हिरण्यगर्भ है, ये पूरा हिरण्यगर्भ है। और गर्भ के अंदर ये कॉस्मिक एग बोलते हैं। तो मटेरियल बेबी मैटर यहाँ से ब्रह्मांड विस्फोटक होके हिरण्यगर्भ है शिवलिंगा। तो शिवलिंग को भी हिरण्यगर्भ का ही सिंबल है। सो हिरण्यगर्भ में से ये इसलिए क्योंकि हिरण्यगर्भ में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर हमेशा पानी डालते रहते हैं, अभिषेकम करते रहते हैं। ऑल्सो ए सिंबॉलिक जेस्चर। सो वैसा ही एक सिंबल जो है, नारायण जो है क्षीर सागर में सोया हुआ रहता है और उसके नाभि से ब्रह्मा का उत्पत्ति होता है। ये भी नारायण, नारायण को विष्णु बोलते हैं, विशेषమైన अणु, विशेष अणु, विशेष अणु बोलते हो। ये बेबी मैटर जो है वो भी हेलो 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 కరెక్ట్ గానే పెట్టానమ్మా, కరెంటేనమ్మా పెట్టింది మీకు. అవును, మీకు కావాల్సిన ఏ అడ్రస్ కావాలా? ఓకే పెడతాను. ఓకే ఓకే. सो विल कंटिन्यू। इस एक बार जब ये ब्रह्मांड विस्फोटक हो गया, हमारा मिल्की वे जो आकाश गंगा है वो क्रिएट हो गया। उसका नाम जो है मंदाकिनी। उस मंदाकिनी, मंद बोले तो बहुत स्लोली वो रोटेट होता रहता है, तो इसलिए उसको मंदाकिनी बोले। सो उस ब्रह्मांड विस्फोटक को और मंदाकिनी का सिंबल दिखाने का सिंबल ही ना स्वस्तिका सिंबल है। ये सेंटर से ऐसा 4 लेग्स होते हैं, यानी जो प्लैनेट्स एंड स्टार जो है सेंटर से ऐसा 4
आर्म्स होता है, उस 4 आर्म्स का यानी सारे प्लैनेट स्टार्स ये ऐसा 4 लेग्स जैसा सेंटर से क्लस्टर जैसा रहता है स्पेस में. So all the planets and stars and moons and all of them are in like a cluster mode. That's why like a coming out of the center. So that's why that swastika is having this, is a symbol of that our Milky Way, which is having these 4 legs. And this symbol has been utilized in all over the world. Every civilization has used it. Every civilization, including Americas, Europe, Africa, Australia, Central Asia, Russia, तक हर एक civilization has used this symbol. Because in the olden days, India was the Vishwaguru of all the whole world. So this symbol was used entire civilization. We have given them the dharmic way of ruling their country. And they have borrowed a lot of our symbols. So the swastika is one of the symbols. But unfortunately, in 1930s, Hitler has misused this symbol and started killing people, uh, saying that Aryans are superior and they belong to the Aryan race, and everybody else is subordinate to them. So they started the wars and abusing this symbol. So that's why most of the countries in the Europe and America, the symbol is actually banned currently. But this symbol signifies the prosperity, the symbol of universe, a good sign, So you can read through that in the UK, World War building floors and public places. Also, 1800, 1900s also in the UK also these symbols were there. So swastika is the symbol of our Milky Way, Mandakini. And another one of the major symbol is the Adisesha. So the Vishnu is actually sleeping. They say it is sleeping under Sheshanaga, Adisesha, in the Kshira Sagara, means the primordial waters. And from there, the matter is getting created. And then when the Brahmana Vispotakam happens, the created world is represented with the Brahma. So in this symbol, so the symbol of the Shivalinga, representing the womb and then the cosmic egg or the baby matter, right? That is getting created in the womb is very similar to this is a representation from the Vishnu. So the Visheshamaya Anu is nothing but the baby matter Shivalinga here. Okay. The baby matter is nothing but the Vishnu here. And when the Big Bang happens, the creation is represented with the Brahma. The concept of God is misinterpreted by the Westerners, God. But here, if you look at Hindu symbolism, Vishnu is before the Brahma. In this one, in the Shivalinga, we represented the Shivalinga as a representation of Shiva. Then the Brahma is after the explosion, right? So they got it wrong. Anyway, so and then in this symbolism, you have the 5 heads to the Adisesha. The Adisesha, Anantasesha, what we call this Sesha Naga, is actually having 5 heads. ये 5 मुख जो है, they are representation to the Panchabhutas. Panchabhani, Hava, Bhumi, space, water, earth, all that, and the Panchabhutas. And then the Seshnag, if you look at the symbol, देखिए आप ऐसा कैसा है? This is the symbol of a infinity. क्योंकि if this matter is coming
जब हिरण्यगर्भ में ये मैटर जो है बहुत अनंत होता है, सो बिग, उसका तुलना नहीं कर सकते. सो इट इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मैटर इज देयर, एंड व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंस, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मैटर कम्स आउट इन वन बिग एक्सप्लोजन, और एक आकाश गंगा क्रिएट हो जाती है. मगर जो भी अंदर बाकी बचा हुआ है वो भी इनफाइनाइट होती है, तो ना वो भी इतना ज्यादा होता है कि वो भी इनफाइनाइट है. जो बाहर आके एक एक्सप्लोजन हुआ है उस वो भी इनफाइनाइट है, जो भी बचा हुआ वो भी इनफाइनाइट है. सो इसलिए हमारा श्लोक जो होता है पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमदच्यते पूर्णमेवा, ये श्लोक जो होता है दैट एक्चुअल उसका मीनिंग जो है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. वो एक बार एक्सप्लोजन हो जाता है तो एक इन्फिनिटी बाहर हो गया, तो उसको निकालने के बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो अगेन इन्फिनिटी. सो दिस क्रिएशन स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए वो श्लोक बना है, वही उसी का जो इन्फिनिटी सिंबल है, ये अनंत शेष का ही सिंबल है, ये नाग का सिंबल ही वो इन्फिनिटी बन गया. इट इज कमिंग फ्रॉम आवर आदिशेषा ओनली. Okay, and there is one more symbol that we use, that tortoise एक और एक symbol है. ये tortoise जो है, why we use this tortoise symbol? So एक each खंड को हम एक tortoise का symbol से हम represent करते हैं. यानी अपना भूमि के अंदर, so we have the tectonic plates जो है, भूमि के अंदर पूरा लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर एक टेक्टोनिक प्लेट्स है, और वो टेक्टोनिक प्लेट स्लोली वो मूव करते रहते हैं. दे विल वी कीप मूविंग स्लोली एंड दे कीप हिटिंग ईच अदर, एंड देन द earthquakes ये पूरा आता रहता है, राइट. सो सिंस दे मूव स्लोली, सिंस टेक्टोनिक प्लेट्स, why we shows tectonic plates, the tortoise को ऊपर एक शेल है और ये स्लोली मूव होता रहता है tortoise. इसलिए मायन दिस इज इन जावा एंड अमेरिकास में भी, इंडिया भारत में भी, हर जगह ये टेम्पल्स के अंदर ये टेक्टोनिक प्लेट्स रिप्रेजेंट करने वाला कुर्मावतार है, और ये स्लोली मूव करने का रिप्रेजेंटेशन टॉर्टोइस से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो इसको ये टॉर्टोइसेस जो है, एक एक टॉर्टोइस एक एक अतला है. सो 7 अतलाएं नीचे हैं, यानी वी हैव 7 अतलास, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, ये सब तलातल पाताल, 7 अतलाएं नीचे, दे आर नथिंग बट दिस अतलास. सो द ओशन दैट is from the African continent to America continent. This is one of the end of the Atlas, and this is one of the end of the Atlas. So in between, the ocean's name is called Atala Antaka Ocean. This is called Atala Antaka Ocean. So in one of this Atala, there was a Samudra Manthan that happened. Both Asuras, Rakshasas, whatever, the Devas, सब लोग मिलके मंथन. Samudra Manthan means thinking. You are trying to find out a solution for a problem. तो समुद्र मंथन जो है एक अतला में हुआ है. सब लोग हर एक अतला से, पूरा दुनिया से आए, एक अतला में बैठ गए, मतलब एक कॉन्टिनेंट में बैठ के दे हैव डन रिसर्च, एंड देन उसके अंदर से जो रस आया है, यानी ज्ञान, वो देवों को मिला है. ऐसा हमारा स्टोरी है, राइट. दैट मीन्स दैट्स व्हाई दैट नॉलेज हैज बीन, who got the knowledge, all the knowledge out of the thinking, who won the competition of creating the knowledge, understanding? India, भारत. इसलिए हमारा देश को भारत क्यों आया बोले तो, भा मीन्स भास्करा, which is a name for our सूर्य देव का. भास्करा इज सूर्य देव नॉलेज का भी प्रतीक है, क्योंकि उससे कांति आती है, कांति से ही हमें नॉलेज मिलती है, क्योंकि अगर अंधेरा है तो ज्ञान नहीं मिलेगा. तो लाइट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ knowledge. So
रथ मीन्स महारथी, अथिरथ महारथी बोलते हैं ना, तो पर्सन हु चेरिशेस इज कॉल्ड महारथी. So like that, the person who cherishes knowledge is called Bharata, Bharatiya. The people who cherish knowledge is called Bharatiya. So ये समुद्र मंथन के समय सारा चीजें हमारे लोगों ने इन्वेंट किया है, डिस्कवर किया है, इसलिए हमारा देश को भारत ही करके नाम भी आया है. ओके, सो वो अतलास रिप्रेजेंट करने के लिए ये दिखा है, देखिए. सो भारत जो एशिया में है वो वितला है, यूरोप जो है अतला है, अफ्रीका जो है रसातल है, तलातल जो है ये अंटार्कटिका है, और महातला इज अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, पाताला इज साउथ अमेरिका. सो ये 7 अतलाएं लोअर वर्ल्ड्स बोलते हैं, और 7 अतलाएं 7 हायर वर्ल्ड्स बोलते हैं, है ना. सो 7 हायर वर्ल्ड्स आर दीज थिंग्स. These are all actually mental states. They are not physical. They may not be physical locations, but there could be physical locations like for example, Tapolok, where people go and live in a certain area and they do tapasya. So उसको तपोलोक भी बोलते हैं. सत्यलोक, महरलोक, ये स्वर्गलोक, ये mental states भी है. So they need not be physical states. These are all conscious level states. Okay. So there are 14 worlds, 7 higher levels and so lower levels. So lower levels are on the Bhumi, this Bhumata. That is the symbolism of these words. And we also use the Garuda in many of our rituals. So you can see the Garuda is there in the Mayan civilization in North America, Garuda in Bali, Garuda in Indonesia, Garuda in Thailand, Garuda in South Asia, Garuda in Nachar Koli. So there is what we are trying to show this is that our symbolism was used across the globe, but सारे दुनिया में ये अब्राहमिक रिलीजियस मिशनरीज ने सब कुछ तबाह कर दिया, उनके टेम्पल्स को तबाह कर दिया, उनका सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया, उनको सबको they have converted everybody and destroyed them. But this is the only living civilization currently that is purely based on the scientific, trying to explain them using the symbols. बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हाई लेवल ऑफ फिलॉसफी पढ़ाने का एक तरीका हमने ढूंढा था, बच्चों को पढ़ाने का. छोटे छोटे बच्चों को स्टोरीज के माध्यम से हाई लेवल ऑफ फिलॉसफी एंड साइंस पढ़ाते थे. तो दैट इज आवर मेथड ऑफ टीचिंग. तो बचपन से ही विद्वान बनाने का हमारा पास टेक्नोलॉजी था, मगर हम खो दिए पूरा. So there is another symbolism called, in every temple we have is the in the entrance we have the Navagrahas. देखिए नवग्रह में यानी not just planets. सूर्य देव जो है स्टार है, वो सब प्लैनेट नहीं है. बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, गुरु, ये सारे प्लैनेट्स है ना. चंद्र जो है वो मून है, यानी इट्स नॉट ए सैटेलाइट, नॉट ए planet, because it is revolving around the sun, earth. और राहु केतु जो है ये दोनों कुछ भी नहीं है. there is no material object, but उसको ग्रह क्यों कहा गया? So ग्रह means not just a planets, it could be any space objects को ग्रह बोल सकते हैं, मगर राहु and केतु are not even the space objects. So these two are actually cardinal, the 2 points within the space. These 2 points are tracking the moon का जो rotational plane, it is at an angle of 5 degrees to the earth rotation plane. So when the moon is going around the earth, it intersects the earth rotation plane. On one side it is called Rahu, and it is other side of the intersection of this moon with the earth rotation plane, it is called Ketu. So when this two Rahu and Ketu are in line
with the sun and earth, that's when we get the solar and lunar eclipses. So all three should be in line, and that happens usually twice a year. The lunar eclipse happens around 2 times a year, and solar eclipse happens around 2 times a year. They're just happening adjacent to each other. When the lunar eclipse happened, within 30 days, you get the solar eclipse also. So we are not considered after Saturn, right? We have not considered Pluto, Neptune, these things, because their effect on the Earth is very small. So we have not considered in our Panchanga, basically, because their effect on the Earth is very, very less. The rotational pull on the Earth is very, very less. So if you look at the Bindu, what is the Bindu from Panchabhuta? So if you look at this, we'll share this link in the description. You can also look at this. So what this Bindu from Panchabhuta is, the Bindu that we put on our forehead, it is also representation that this entire universe was created from a small one point, and we are also have been created the similar way, because we are also part of the creation. So this is just representing the creation symbol. And not only that, we have it. Several people keep saying that this is could be for a B2E, or it could be to distract the evil eye, or a mark to protect one's inner eye, inner soul, you know. So, but the major important this thing is that you believe in the creation theory that this entire universe came from one particular Hiranyagarbha, one spot, and that can be visualized in this video. Okay, we will share it in the description. And if you look at the swastika symbol, you see that swastika. This is nothing but the swastika symbol. This is a Lithuanian people. They also celebrate this symbol. You know, so this symbol has been used all over the world. So these different civilizations across the globe, they use this bindi, you know, forehead. Not only of the men, not only the women, but men also use that on the forehead. And we have different cycles in our Panchanga. We have a monthly cycle, daily cycle, 24 hours day cycle, monthly 1 month, 30-day cycle, lunar month, which is 29 points. Luni solar calendar is luni solar month is about 30 days. And we have 12 luni solar months in a solar year. And luni solar, in a luni solar day, if you just ignore this, the conjunction of Earth, Jupiter, and Saturn, you just ignore this. In his luni solar month, the Earth, Moon, and Sun, they are in the same line, So every month, the Moon rotates around the Earth, and when they are in one line, it is 1 month, one luni solar month. It is one luni solar month. So 12 months of that is approximately 360 days, and we have approximately 1 year. But this kind of conjunction, there is another conjunction, which is Saturn and Jupiter. This conjunction happens every, I think, 30 years or something. Yeah? 16, huh? So no, if you look at this whole conjunction, both Earth, Moon, and Sun, as well as Earth, Jupiter, and Saturn, these both conjunctions happen around in every 60 years.
So for that, that 160 year, we also call it as a Manava Yuga. And that Manava Yuga, we have 60 years. Each year, we have given a name, particular name for for that 60 years. So if you look at in our Panchanga, 60-year name cycles. So forgot the LCM required for this. So this one, this cycle happens every 6 months. We get this, all three of them are in line every year, twice a year it happens. But this one, along with this junction, both of them together, it happens in once in every 60 years. So like that, we have a 5-year yuga, 1-year yuga, 5,000 year yuga, 12,000 year yuga, 12-year yuga, and 4.32 million Chatur Yuga. So this Yuga concept, we will explain it it's a big concept. It is mainly created to come up with a even number of days for the rotation of these planets and around the sun. And then manvantras have been created for calculating the our galaxy, which is Akash Ganga's rotation also. So that required thousands and thousands of millions of years of earthly rotations around the sun for each rotation of our galaxy. So this yuga concept is very complicated, but we will if in order to understand this yuga concept, we have to understand all the calendar systems that exist in India, Adhika Masa, why we get the Adhika Masa, and why the different yugas have been, the dimension has been mentioned in different Puranas. Every one of them had a different purpose and context. We will have a separate class for the yuga. There is one more important number that we use is 108, golden ratio, in especially in the astronomy. And when we do any puja, the mala that we use is about 108 pusas, basically, right? The Rudraksha mala. It has 108 Rudrakshas. Why? What is the significance of this 108? Our rishis, they know the distance between the earth and the sun, earth and the moon's diameter, earth diameter, all this kind of stuff. And they have measured this. How they measured it, we do not know. But it is so fascinating to know how rishis know about this. That's why they use this Rudrakshamala. If you look at the diameter of the sun, okay, if you look at the diameter, and if you put 108 diameters of the sun, that is the distance between the earth and the sun. From the earth to the sun, if you can put about 108 suns, and you get the diameter of the distance between the sun and the earth. Okay. Similarly, if you look at the distance between the moon and the earth, right? It's about the same size. The 108 moons, if you put in between the earth and the moon, you get the distance between the earth and the moon. So that's why, because they are in a perfect ratio, the diameter of the moon and the diameter of the sun and the distance, since it is in a perfect ratio, we are able to have a complete eclipse. The moon is able to perfectly encircle the size of the sun because they are in a perfect ratio. That's how our people were able to calculate it. And there were many ways of like using this Panchanga and our Shastras. There are many ways of recording our history, Itihasa. So there are so many, 22 types of recording our history. Westerners say we didn't have a proper way of recording the history, but look at this number of types of way. We have the Itihasa, the number one. This that has certainly happened.
Iti Urita and Pura Urita. Katha. So we have the people chanting the kathas in a story format, gathas in the singing format, telling it in the philosophical way, a little bit here and there in the Purana type. Sankalpa, daily Sankalpa, we calendar geopositioning, we tell where we are. So there are Avadana, the Brahmins, they do the Avadana. This over there, they actually memorize all the entire history and our philosophy, everything. So like this, there are 22 methods of remembering our and keeping our historical records. Such a beautiful system that our people have created. Each system can appeal to a different type of people. This is one more, the games. We have one game called Pachisi. If you look at the Pachisi game that was played in the courtyards, in the kingdoms, जो गेम जो है पच्चीसी, ये हर एक घर में होती थी. हमारे बचपन में हमारे घर में भी होती थी. ये बहुत पुरानी गेम है. मगर इफ यू लुक एट मायन सिविलाइजेशन, उनके पास भी एक सिमिलर गेम है, एग्जैक्ट सेम गेम है. इफ यू लुक एट इट, उसको वो लोग पटोली बोलते हैं. पच्चीसी को पटोली बोलते हैं, मायन पच्चीसी गेम. ये सिग्निफाई करता है कि पुरातन काल में हमारे लोग और मायन सिविलाइजेशन कनेक्टेड है. मीन पीपल वेर ट्रैवलिंग, यहाँ से वहां जाते रहते थे. एंड वी हैव आल्सो पीपल माइग्रेटेड, बिकॉज अपने पुराणों में हनुमान जी पाताल जाके आता है, बाली को पाताल में भेज दिया जाता है वामन अवतार में विष्णु जी ने. तो ये सारे देर इज ए clear cut evidence that our travel of our people all the way till Patala, which is South America. और एक चीज है, if you look at the pyramids, not only in the Egypt, but if you can look at the pyramids are there in the Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, और on the way till Mexico में है, Honduras में, यहाँ पे भी है. So in between, the pyramids are available in the Tahiti Islands and Easter Islands. So all the travel path from India to the Americas and in the Europe also, you could see the pyramids. Very similar to our temples. Pyramids are nothing but our, temples actually. So if you look at where the pyramids are around the world, you can see this. There are so many countries the pyramids are available. So if you look at on the pyramid, जैसा हमारा राम, सीता और लक्ष्मण का पिक्चराइजेशन होता है, वैसा चीज ये रामा सीता, ये रामा है सामने, सीता है और ये लक्ष्मण है. ये तीनों जंगल में घूमते रहते हैं. तो ये सिंबल जो है, it is etched on the pyramids. And then this is one of the गुड इवनिंग. आज